You said that she was really taking care of you, and sort of the age of 10. Mother and father, I'm assuming, very, very busy. Yeah. Explain that to me. My mother was an incredible trailblazer, an amazing example for me of strength and resilience and glamour and determination and ambition. And she was a great mother, too. But she would also say, she couldn't do it alone. And she wasn't pretending she could. So she surrounded us with people who loved us. We had two amazing nannies. One of them worked for my mother until the day she died. The other worked for my mother until the day my mother died, and still works with us today. She worked after we grew up, she worked as my mother's personal assistant. So they were very much part of our lives and part of our extended family. And of course, my grandmother, who she trusted completely with us. So she showed me a lot at a time when, not many women were doing what my mother was doing inside the boardroom and on the construction sites all the time, by the way, with 5-inch heels and perfectly coiffed hair. So she made it look incredibly easy, but it was and continues to be very challenging to balance work and life like that, especially at a time where what she was doing was so singular. So she really... And my mother served as an unbelievable role model for me for what is possible. How to be an amazing mother who is loving and nurturing and fun and provides for her children, and also to be unabashedly and doggedly pursuing one's goals in a professional capacity. So she did that when she was married to my father. She did that following their divorce, and really was just an amazing mentor for me. Then, I try to do the best decisions I can, and on balance, at least compared to the competition, pretty good decisions. But the marginal value of a better decision can easily be, in the course of an hour, $100 million. Given that, how do you take risks? How do you do the algorithm that you mentioned? I mean, deleting, given that a small thing can be $1 billion. How do you decide to... Yeah. Well, I think you have to look at it on a percentage basis, because if you look at it in absolute terms, it's just, I would never get any sleep. It would just be I need to just keep working and work my brain harder, And I'm not trying to get as much as possible out of this meat computer. So it's not, it's pretty hard, because you can just work all the time, and at any given point, like I said, a slightly better decision could be $100 million impact for Tesla or SpaceX, for that matter. But it is wild when considering the marginal value of time can be $100 million an hour at times, or more. Is your own happiness part of that equation of success? It has to be to some degree. If I'm sad, if I'm depressed, I make worse decisions. So I can't have if I have zero recreational time, then I make worse decisions. So I don't have a lot, but it's above zero. I mean, my motivation, if I've got a religion of any kind, is a religion of curiosity, of trying to understand. It's really the mission of Grok, understand the universe. I'm trying to understand the universe, or let's at least set things in motion such that at some point civilization understands the universe or far better than we do today, and even what questions to ask. As Douglas Adams pointed out in his book, sometimes the answer is arguably the easy part. Trying to frame the question correctly is the hard part. Once you frame the question correctly, the answer is often easy. So I'm trying to set things in motion such that we are at least at some point able to understand the universe. So for SpaceX, the goal is to make life multiplanetary, which is, if you go to the Fermi paradox of where are the aliens, you've got these sort of
great filters. Like, it's just like, why have we not heard from the aliens? Now, a lot of people think there are aliens among us. I often claim to be one. Nobody believes me, but it did say alien registration card at one point on my immigration documents. Yeah. So I've not seen any evidence of aliens. So it suggests that at least one of the explanations is that intelligent life is extremely rare. And again, if you look at the history of Earth, civilization has only been around for 1/1,000,000th of Earth's existence. So if aliens had visited here, say 100,000 years ago, they would be like, well, they don't even have writing, just hunter-gatherers basically. So how long does a civilization last? हमारी लाइफ में कुछ तरह के ब्लॉकेजेस है. सो द फर्स्ट ब्लॉक वी हैव इज आवर पास्ट लाइफ. बचपन से आई यूज टू गेट वन ड्रीम ऑन एन इंटरवल. कभी 6 महीने, कभी साल, कभी 2 साल में मेरे को एक सपना आता था कि मैं भाग रही हूँ और कोई मुझे मार रहा है. बट जब 2015 में व्हेन आई वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, देन आई वेंट टू वन ऑफ माय मेंटोर जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते थे. दैट इज कॉल्ड PLR. ठीक है, आई डिड दैट. वहाँ पे मैं गई एंड आई वॉज ह्यूज लाइक, एंड आई वॉज अनमैरिड. हमारे घर में बहुत सारी पार्टी चल रही थी एंड मैंने ये देखा कि मेरी मम्मी यही है. मतलब आई डोंट नो, बट जो है वो है, मैंने देखा. और वहाँ पे कुछ पार्टी हो रही है, हमने कुछ जीता था, हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे. सडनली कुछ और रिलेटिव्स आए जो हार गए थे हमारे, एंड उन्होंने मुझे पीछे से मार डाला. सडनली कुछ और रिलेटिव्स आए जो हार गए थे हमारे, एंड उन्होंने मुझे पीछे से मार डाला. हमारी लाइफ में कुछ तरह के ब्लॉकेजेस है. सो द फर्स्ट ब्लॉक वी हैव इज आवर पास्ट लाइफ. बचपन से आई यूज टू गेट वन ड्रीम ऑन एन इंटरवल. कभी 6 महीने, कभी साल, कभी 2 साल में मेरे को एक सपना आता था कि मैं भाग रही हूँ और कोई मुझे मार रहा है. बट जब 2015 में व्हेन आई वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, देन आई वेंट टू वन ऑफ माय मेंटोर जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते थे. दैट इज कॉल्ड PLR. ठीक है, आई डिड दैट. वहाँ पे मैं गई एंड आई वॉज ह्यूज लाइक, एंड आई वॉज अनमैरिड. हमारे घर में बहुत सारी पार्टी चल रही थी एंड मैंने ये देखा कि मेरी मम्मी यही है. मतलब आई डोंट नो, बट जो है वो है, मैंने देखा. और वहाँ पे कुछ पार्टी हो रही है, हमने कुछ जीता था, हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे. सडनली कुछ और रिलेटिव्स आए जो हार गए थे हमारे, एंड उन्होंने मुझे पीछे से मार डाला. एंड वो जो दुख था, आई वॉज स्टक इन टू दैट कि मैं अपने लोगों को बता ही नहीं पाई कि मैं मर गई हूँ. मुझे कहाँ गाड़ दिया मुझे नहीं पता, एंड कहीं उस चीज़ की वजह से मैं स्टक हो गई थी. आई लिटरली फेल्ट दैट कि कुछ तो कनेक्शन है. तो आई फाउंड इट, और तब से चीज़ें मूव होने लगी मेरी लाइफ में. बट सी, दैट वॉज माई थिंग, नॉट नेसेसरीली कि आपका भी कुछ हो. अगर हमारे लाइफ में वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए, दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि एनर्जी का सबसे पहला रूल है कि टोटल एनर्जी इज़ 1. मतलब अगर हम एनर्जी है तो हमारी सबकी मिलके जो भी एनर्जी है ये एक ही है. दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी. टोटल एनर्जी इज़ 1. सेकेंड रूल इज लाइक अट्रैक्ट लाइक. हम जैसे होते हैं हमारे फ्रेंड्स भी वैसे होते हैं. एग्जाम्पल, जो ड्रिंकर होते हैं उनके फ्रेंड बराबर वैसे ड्रिंक करने वाले मिलते हैं. जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं उनके बराबर फ्रेंड वैसे होते हैं. जो गॉसिप करने वाले लोग होते हैं बराबर उनके फ्रेंड्स वैसे होते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स और हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बिकॉज हमारे और उनके अंदर की जो एनर्जी है वो मैच करती है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेजोनेंस. लाइक अट्रैक्ट लाइक. अगर हमारे लाइफ में वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए, दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि हमारी फ्रीक्वेंसी उस पर अलाइंड ही नहीं है, इसीलिए वो चीज़ हमारे लाइफ में नहीं है. इसलिए अगर हमारे लाइफ में पैसा नहीं है तो पैसे के लिए रोना नहीं है. हमारी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप के लिए रोना नहीं है. बट उस चीज़ की क्या फ्रीक्वेंसी है, उस पर जब हम अलाइन करते तो वो अपने आप आएगी ना. आप घर पे बैठ जाओ और अपनी एनर्जी सेट करो. उस एनर्जी से ट्यून करने वाली जो जो अपॉर्चुनिटी होगी, दैट विल कम टू यू विद डिफरेंट सोर्सेस. सेकेंड रूल यू अंडरस्टैंड, रेजोनेंस, लाइक अट्रैक्ट लाइक. सो जो हमको चाहिए हमको उसकी तरह बनना पड़ेगा. अब हमको पैसा चाहिए तो हमें पैसे की फ्रीक्वेंसी पे अलाइन होना पड़ेगा. सिंपल. होली का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है. आई एम श्योर आप सब ने बुक कर ही लिया होगा हॉलीडे. बट डू यू रियली थिंक कि जब आप लॉन्ग वीकेंड से वापस आओगे यू विल स्टिल बी इन द सेम रेस्टिंग मोड? आपको रियली वहाँ पे एंजॉयमेंट मिलने के बाद यहाँ पे वापस से काम शुरू करने का स्ट्रेस तो नहीं है? बिकॉज योर बॉडी इज नॉट द ओनली वन हु शुड रेस्ट, योर माइंड ऑल्सो शुड रेस्ट. बट अगर आप वीकेंड पे वहाँ जा रहे हो, यू आर रेस्टिंग, योर बॉडी इज डेफिनेटली रेस्टिंग, यू आर रिलैक्सिंग,
but your mind is still working over there as well. इसीलिए आने के बाद भी you will not feel relaxed. You will instantly jump into this stress mode क्योंकि mind ने तो rest ही नहीं किया है, सिर्फ body ने rest किया, and that is the problem. A serious gaming facility built for gamers by gamers. Here you have 15 PCs, high refresh rates, low pings, and unlimited fun. A PlayStation setup. Here you get high-end gaming setups, power backups, and stable gaming sessions even during outages. All a budding professional gamer needs. Are you sure you can handle the gaming stress? Because our PCs can. Welcome to a serious gaming facility built for gamers by gamers. Here you have 15 PCs, high refresh rates, low pings, and unlimited fun. A PlayStation setup. Here you get high-end gaming setups, power backups, and stable gaming sessions even during outages. All a budding professional gamer needs. Snacks to keep you going all night. Are you sure you can handle the gaming stress? Because our PCs can.